So we have our last speaker for today, Mr. Ajit Panicker, and he will be talking about the latest trends and tech future in the service industry. Mr. Panicker is the CEO of Nova Companies, a 42-year-old company offering HVAC solutions in consulting, contracting, and customer services. He is also the founder of a technology startup, Pureblu Technology, that offers IT and IoT solutions for the HVAC&R industry. He is currently the National President of the Refrigeration and Air Conditioning Trades Association of India, the RATA, a mentor to many, an avid marathoner, trekker, a thought leader on disruption, and a strong advocate of entrepreneurship. He believes the HVAC&R industry is a fast and evolving segment for the growth and disruption. Thank you. Thank you, Saloni. Can you just confirm once my screen is shared that you can hear me and my screen you can see? So we can clearly hear you and your screen is also visible. Awesome. Thank you very much. So, दोस्तों मैं अगले 30 मिनट लूंगा. पता है मुझे कि भूख लग रही है हमें, बट मैं आपको कुछ चीजें ऐसे दिखाऊंगा कि आप अपनी भूख भूल जाएंगे. Okay? Let's kill hunger with some information. So, the primary thing before कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी या क्या अलग चीज होने वाले अगले 10 साल में, सबसे पहले हमें यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडस्ट्री बदल कैसे रहा है. तो अभी कैसे चल रहा है हमारा इंडस्ट्री. ओके, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो कंपनीज को बेचते हैं, ब्रांड जो बोलते हैं हम, ब्रांड्स फिर डीलर्स को बेचते हैं या इंस्टॉलर या सिस्टम इंटीग्रेटर्स, और इस डीलर्स के साथ इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस जुड़े हुए हैं, और फिर उनका वो लास्ट माइल कनेक्ट जो होता है, वो इंजीनियर्स और टेक्नीशियन जो है वो मशीन्स और कस्टमर के साथ इंटरैक्ट करते हैं. ये 18th सेंचुरी का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे निकला हुआ मॉडल है. इसे हम कहते हैं पाइपलाइन. दिस इज कॉल्ड द पाइपलाइन. इट इज अ लीनियर मॉडल. ये पाइपलाइन वर्ड हम सब यूज करते हैं ना. सेल्स वाले पूछेगा तो लीड्स का पाइपलाइन क्या है, प्रोडक्शन वाले को पूछेगा तो बोलता है कि यार स्टॉक लेवल का पाइपलाइन क्या है, ब्रांड वाले को कंपनी वाला इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट दिस कंपोनेंट, व्हाट इज द पाइपलाइन. एवरीबॉडी हु इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग विल आल्सो अंडरस्टैंड दिस. टेक्नीशियंस आर ऑलवेज टॉकिंग इन टेक्नीशियन, यार अपना कंप्लेंट्स का पाइपलाइन क्या है, कितना स्ट्रांग. सो दैट्स द पाइपलाइन. दैट्स वेयर द वर्ड पाइपलाइन हैज कम फ्रॉम. दिस इज द करंट इकोसिस्टम, वेरी सक्सेसफुल इकोसिस्टम. For almost 2 centuries we have lived with this, and you and I have benefited from this, and you have seen industrial revolution. But this is changing, completely changing. And what is it changing to? It is changing to something called as a platform. From the pipeline, it is going to the platform. Very important. अगर आप इस change को अगर समझ सकते हो तो आपको आगे पता चलेगा कि आप हमारे इंडस्ट्री में क्या क्या चेंजेस आएंगे, आपके जॉब्स में क्या चेंजेस आएंगे, मशीन्स और सर्विस इंजीनियर्स कैसे बात करेंगे और उनका इंटरैक्शंस कैसा होगा. सो द फर्स्ट थिंग इज द कनेक्टेड वर्ल्ड. व्हाट इज द कनेक्टेड वर्ल्ड? 3 important technologies has changed this. Okay, one is internet, second is smartphone, third is cloud computing. Cloud computing का मतलब होता है कि इंटरनेट के थ्रू आप अपना कोई आप बेसिक मोबाइल फोन या फिर अपना टैबलेट जो 5-6 हजार रुपया है उसी में से आप यूज कर सकते हो, और क्लाउड के जो इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करके आप अपना डेटा एक्सेस कर सकते हो. द टेक्नोलॉजीज, these 3 important technologies is going to change the pipeline and convert it into platform. So this is the connected world. How does the connected world ये पूरा इसको डिसरप्ट कैसे करेगा या फिर इसमें चेंजेस कैसे लाएगा? कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है, वो तो ओईएम को बेचते थे, वो कहीं ना कहीं साइड पे कंटिन्यू होगा, लेकिन वो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर कनेक्टेड वर्ल्ड के साथ विल गेट कनेक्टेड. डीलर्स एंड इंस्टॉलर्स आल्सो विल कम टू द कनेक्टेड वर्ल्ड. दे विल आल्सो गेट कनेक्टेड. इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस. दिस वाज द लीनियर मॉडल. जो पाइपलाइन जो सीधा सीधा मॉडल था, आज पूरा ऑल द स्टेक होल्डर्स, जितने लोग हैं इस इंडस्ट्री में, सब एक साथ जुड़ जाएंगे इंटरनेट के साथ. अब आप देख सकते हो, ब्रांड मशीन के साथ बात कनेक्ट हो जाएगा, डीलर मशीन के साथ, टेक्नीशियन मैन्युफैक्चरर के साथ
सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होगा. दिस इज द फ्यूचर दैट इज हैपनिंग. ये सिर्फ हमारे इंडस्ट्री में नहीं हुआ है. आप कहीं पे भी इंडस्ट्री देख लो, ट्रैवल इंडस्ट्री देख लो, फूड इंडस्ट्री देख लो, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री देख लो, एवरीथिंग हैज गॉट कनेक्टेड बाय दिस डिसरप्शन. एंड ये जितनी भी इंडस्ट्रीज के बारे में बात किया हुआ है, सबका मेथड पाइपलाइन था. इट वॉज ऑलवेज अ स्ट्रेट लीनियर मेथड एंड एवरीथिंग इज गेटिंग कनेक्टेड. प्लेटफॉर्म का एग्जाम्पल्स मैं बताता हूं मैं आपको. Amazon, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमैटो, एयरबीएनबी, उबर, ओला, ये सब है. लेकिन ये कोई बाहर का टेक्नोलॉजी नहीं है. द मोस्ट इनोवेटिव प्लेटफॉर्म, सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म हमारे देश में से निकलता है. एंड मेनी पीपल डोंट नो अबाउट इट. दिस टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग फ्रॉम आवर कंट्री. और आपको पता है सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी जो आज हमने इनोवेट किया है, जो भारत सरकार ने इंप्लीमेंट किया है, वो है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटीग्रेटेड सिस्टम्स. पहला क्या होता था, सरकार बैंक से बात करता था, बैंक फिर उनके एम्प्लॉयज जो होता था उनके फिर हमारे पास पहुंचता था. एक लीनियर अप्रोच था. आज सरकार पैसा सिटीजन को डायरेक्ट भेजता है. आप बैंक में अब कितने बार जाते हो, आप अपना बैंक पासबुक कितना बार अपडेट करते हो, मोबाइल से ट्रांजैक्शन करते हो, पेटीएम से करते हो, यूपीआई से करते हो, जीपे से करते हो. दैट इज अ प्लेटफॉर्म. इट इज कंप्लीटली डिसरप्टिंग एंड चेंजिंग हाउ थिंग्स आर हैपनिंग. बट when this platform changes, ये प्लेटफॉर्म ऐसा चेंज होता है, उसके साथ में कुछ डिसरप्टिव चीजें साथ में आते हैं. एक होता है डेटा एनालिटिक्स, सेकंड होता है आईओटी. मेरे बहुत से स्पीकर्स में जब बीएमएस की बात हो रहा था तभी भी आईओटी की भी बात कर रही थी. ये आईओटी क्या है? फुल फॉर्म इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स. इंटरनेट आपको समझ में आ गया. थिंग क्या है? वो जो बीएमएस का जो सेंसर बात कर रहा था ना, वो कि वो मशीन में लगता है, फिर वो कंट्रोलर पर लगता है. जब वो सेंसर आपको केबलिंग नहीं करना पड़ता है और उस सेंसर वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाता है, वो आईओटी बन जाता है. दैट इज हाउ इट इज. यानी कि आपका जो बहुत से डिस्कशंस आज हुआ ना, कम्युनिकेशन केबल्स होगा, कम्युनिकेशन केबल्स में क्या क्या प्रॉब्लम होता है, बट इन आईओटी देयर इज नो कम्युनिकेशन केबल. द सेंसर विल स्टार्ट टॉकिंग डायरेक्टली टू अ प्लेटफॉर्म. Add to it artificial intelligence and compliances. When I say compliances का मतलब क्या होता है मालूम? Technician training, technician certification, green building certifications, B star rating, everything can change because of this platform. So this is how the entire ecosystem is moving. What is the impact of this platform? Let's go ahead. So because of this platform, अब आप कस्टमर्स की तरफ से ले लो, उनको क्या क्या फर्क पड़ेगा. अब आपको पता है कि सब लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है इंटरनेट के साथ. कस्टमर्स विल गेट रिलायबल HVAC सर्विसेज बिकॉज नाउ ही इज कनेक्टेड रियल टाइम. वो फोन पे बात नहीं करेगा, उसका मशीन डायरेक्टली बात करेगा और टेक्नीशियन डिप्लॉय करेगा. और जैसे ही ये हो रहा है, कंपनी को भी पता चलेगा, आपका खुद का डीलरशिप जो कंपनी है उनको भी पता चलेगा, मैन्युफैक्चरर को भी पता चलेगा. जो छोटी मशीन्स है, आपकी जो रेसिडेंशियल मशीन्स या जो भी आप बोलोगे, those residential machines will go online and that is very important for you to understand. बहुत से लोगों को लगता है कि यार ये Amazon और Flipkart में मशीन नहीं बिकेगा. 100% बिकेगा. It is just a matter of time. So जो customers, जो retailers जो है, their business is going to get affected. They will continue, but it will have a long-term impact. Why? Because these customers will buy air conditioners online and services will be delivered through a platform because all of them will connect to it. One-stop service. अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. वन स्टॉप सर्विस का मतलब क्या होता है? अब आप एक बैंक ले लो, समझ लो ICICI बैंक ले लो. उसके कितने आउटलेट्स हैं? ऑल इंडिया आउटलेट्स हैं. और इतना पुरानी कंपनी. आपको पता है इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? इनके जितने ATMs और बैंक्स और ऑफिसेज में है, यहाँ पे आप उनके पास सब ऑल टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनर्स है, ऑल टाइप्स ऑफ ब्रांड्स है. चिलर्स भी है, VRF भी है, प्रिसिशन एयर कंडीशनिंग भी है, विंडोज भी है, स्प्लिट्स भी है, सब कुछ है. और अलग अलग लोकेशंस में उनकी यहाँ पे एडमिन टीम है जो सिर्फ ये मैनेज करता है. क्योंकि हमको सब पता है कि अगर एयर कंडीशनर अगर बैंक में बंद हो गया तो फिर काम रुक जाता है, ATM मशीन में रुक जाता है, एवरीथिंग गेट्स अफेक्टेड. और उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यार इसको मैनेज कैसे करें, क्योंकि हर कंपनी में अलग अलग डील करना पड़ेगा. प्लेटफॉर्म बिजनेस विल चेंज दैट. ICICI बैंक विल बी हैप्पी टू डील विथ ओनली वन प्लेटफॉर्म, और उस प्लेटफॉर्म विल रीडायरेक्ट
everything, will take responsibility and will redirect through technology and will make sure the right technician from the right dealership or from the right company will land up there. This is an evolving stage and it will happen. And you will see how this whole scenario will change. Please study the other industries. You will exactly understand how this works. Monitoring, real-time energy consumption, air quality. आज की तारीख में हमारे स्टार लेबलिंग स्कीम पे आपको रेटिंग मिलता है. 3 स्टार, 5 स्टार, कंपोनेंट्स पे भी रेटिंग आता है, ड्राइव्स पे आता है, मोटर्स पे आता है. अच्छा, हमने तो उसको खाली लेबल सर्टिफिकेट देते हैं ना, हैंड ओवर टाइम पे हमने उसको सर्टिफिकेट संभाल के दे दिया. लेकिन क्या ये रेटिंग 2 साल के बाद भी वही रेटिंग है? आज तो कोई मॉनिटर नहीं कर पाता है. लेकिन IoT डिवाइसेस विल चेंज द गेम. कस्टमर को पता चलेगा थ्रू द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट कि ये मशीन का ये मशीन का इक्विपमेंट परफॉर्मेंस कैसा रहा. यानी कि पहले साल में क्या था और 5वें साल में क्या था और ऑन द 10th ईयर में इसका फर्क क्या है, और उनको कंपैरिजन. और रियल टाइम, वो आपके कंट्रोल में नहीं होगा. इट विल बी इन कस्टमर्स कंट्रोल. इसे कहते हैं डेमोक्रेटाइजिंग ऑफ द डेटा. यानी कि डेटा जो है, that information will be available with everybody, so that transparency will come in, accountability will come, and knowledge of the product life cycle and replacement. मशीन कब रिप्लेस करना है आपका कस्टमर को खुद पता चलेगा with information कि yes, this is the time to replace. अब डीलर्स है, सर्विस प्रोवाइडर्स है, OEMs है. OEMs will now have service providers will have easy installation and service mechanism through customer ratings and ratings. यानी कि आज हमें बताना पड़ रहा है ना, कंपनी आज बोलते हैं कि हमारा सर्विस सबसे अच्छा है. अच्छा ठीक है, ये तो आपकी कंपनी है, आप बोल रहे हो आपकी सर्विस अच्छा है. आपके कस्टमर्स क्या बोल रहे? सर्विस रेटिंग्स. दिस विल बिकम अ बिग गेम चेंजर इन द इंडस्ट्री. एंड इट इज ऑलरेडी देयर. रेस्टोरेंट का कस्टमर रेटिंग्स है, गाड़ियों का रेटिंग्स है, सब कुछ है. इट विल बिकम सेम थिंग फॉर टेक्नीशियन रेटिंग्स एज वेल एज सर्विस प्रोवाइडर्स रेटिंग. यू डोंट हैव टू से इट विल बी देयर. आज आप Amazon में जाके कोई प्रोडक्ट लोगे तो उसका 350 रिव्यू है. उसी से आप कभी कभी डिसाइड करते हो कि ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए. बहुत से सर्विस प्रोवाइडर्स की वर्किंग कैपिटल कम होते जाएगा उनका, बिकॉज वो सर्विसेज जो है वो उनका मेन बिजनेस बनेगा. क्योंकि ये जो कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट है इन्वेंट्री, ये या तो कंपनी वाले ले लेंगे या फिर ये प्लेटफॉर्म उठाएगा, या फिर प्राइमरीली लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस विल मैनेज इट देमसेल्व्स. working capital will go down because services is actually more process driven and organizational driven rather than a capital intensive business. प्लेटफॉर्म खुद एक लीड जनरेशन प्लेटफॉर्म बन जाएगा. एक सर्विस प्रोवाइडर को एक्सेस ऑफ लार्ज पूल ऑफ ट्रेन टेक्नीशियन. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि ये एक्सेस कैसा होगा. आपको पता है आज उबर का ड्राइवर कितने कंपनियों के साथ काम करता है? वो उबर के साथ भी काम करता है, ओला के साथ भी काम करता है, मीरू के साथ भी काम करता है, अब कुछ लोग स्विगी के साथ भी काम करना शुरू कर दिया. सो कैन यू अंडरस्टैंड हाउ दैट कॉन्सेप्ट इज चेंजिंग? सो टेक्नीशियंस आगे चल के, let's say if you are a technician who is very good in precision or in chiller manufacturing, eventually 10 years from now a platform will make sure that you can be a focused technician, good at one thing but working for multiple organizations, and that's a reality. It is already बाकी सब इंडस्ट्रीज में ये आ गया और इसके वजह से सबका फायदा. ओके, जो आपकी आज आपका पूरा खर्चा और आपका पूरा करियर एक आदमी को, एक कंपनी को उठाना पड़ता है. तो अगर उनके पास उतना काम नहीं है और ROI नहीं होगा तो भी वो प्रॉब्लम है. और आपका स्पेशलिटी है और आपने यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज ग्रेट फॉर मी. So you will get now an opportunity to work with multiple customers, and the customers will get the best technician who is handling their problems. Access to spare parts. Today, the spare parts is dependent on the company who manufactures. बहुत से कंपनी है ना अपना ये USP बना के रखता है कि आपको अगर एक कंपनी का स्पेयर पार्ट चाहिए तो मेरा डीलरशिप होना चाहिए और मेरे पास. अब आपको पता है ये कंपोनेंट जो बहुत से जो कंपनियां हैं जो वो अपनी खुद की स्पेयर पार्ट नहीं बनाते, कोई ना कोई बनाता है वो जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर होता है. ये कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर ग्लोबली इस प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट होगा और ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन जाएगा. और जब ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन जाएगा, एनी स्पेयर पार्ट विल बी अवेलेबल. Artificial intelligence will tell you which are the 5 similar spare parts. It will study the different specifications
और आपको बताएगा कि यार ये कंपनी के पास ये स्पेयर पार्ट है ना, वो अगर नहीं दे रहे हैं ना, ये 3 पार्ट है, इसमें से कोई एक चुन लो, आपका काम हो जाएगा. दैट इज हाउ टेक्नोलॉजी विल चेंज योर लाइफ. बहुत सी कंपनियों का API. See, when I was watching that DMS thing, one of the problems questions that came up is कि I've got LawnWorks, I've got BackNet, I've got different technologies which are working, and then how do I integrate them? APIs is open interfaces. So आप अपना इंटरफेस फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना सॉफ्टवेयर यूज करो, लेकिन सब API में थ्रू API एक प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट होगा और सब एक दूसरे के साथ सीमलेसली बात करेगा. एंड दैट्स व्हाट विल हैपन. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो मैन्युफैक्चरर है प्रोडक्ट का, जो ब्रांड ओनर है, उनको डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा ऑफ द मशीन थ्रू IoT डिवाइस. इस पे वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर पाएगा, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस कर पाएगा, एंड फोरकास्ट व्हेन द रिप्लेसमेंट हैज टू बी डन. कैन यू इमेजिन टुडे यू हैव अ just hypothetical thing how this can be a game changer. आज जब आप AMC ऑफर करते हो एक मशीन का, वो फिक्स्ड रेट है ना, 3 साल पुराना हो तो इतना, 5 साल हुआ तो 10 साल पुराना होगा तो इतना. अगर आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का अगर आपको पता होगा, कैन यू इमेजिन हाउ मैन्युफैक्चरर्स विल ऑफर AMC based on the condition of the machines? The rate will define, which means every machine will have data which will define कि इसका AMC क्या होना चाहिए. That could be as disruptive as that for the manufacturers and for service providers, and they will be able to increase their profitability. Technicians, यहाँ पे हमारे देश में सर्टिफिकेशन नहीं है, और हम में से बहुत से लोग हैं जो सरकार से बात कर रहे हैं कि सर्टिफिकेशन होना चाहिए. there should be a license to be given. अब मैं एक चीज आपको बता सकता हूँ, हमारे इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मे बी डिप्लोमा होल्डर होगा या फिर ऑन द जॉब सीखा होगा. अब जब ये सर्टिफिकेशन आएगा, द नंबर 1 प्रॉब्लम विल बी कि नहीं, ये आदमी तो फिट ही नहीं होता है, और ये आपका बेस्ट टेक्नीशियन है क्योंकि ये पिछले 25 साल से काम कर रहा है, ही नोज हिज जॉब वेरी वेल. और हाउ डू यू ट्रेन हिम? आज की तारीख में ट्रेनिंग कैसे होता है? मैन्युफैक्चरर ट्रेन करता है, आदमी को फील्ड से निकालता है, आपका 2 दिन का काम निकाल के आपको एक क्लासरूम में डालता है, फिर आपको ट्रेन करता है. और ट्रेनिंग एक दिन में नहीं होता, इतना प्रोडक्ट्स है और इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, इवन इन एयर कंडीशनिंग, इट इज वेरी डिफिकल्ट. सो ऑनलाइन ट्रेनिंग विल बिकम अ रियलिटी. अब ये ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि आपको ऑनलाइन जाके आप यू विल सी द वीडियोस एंड यू विल सी, नो. हाउ इट विल वर्क इज, जब आपको कंप्लेन लॉग इन किया जाएगा, ठीक है, उस कंप्लेन का इंफॉर्मेशन और मशीन का डेटा लेके आपको उस प्रॉब्लम को कैसा सॉल्व करना है उसका वीडियोस दिया जाएगा, आपके फोन पे आएगा, और पीछे एल्गोरिदम्स होगा ये समझने के लिए कि आपने इस वीडियो को कितने बार देखा होगा, आपने इस कंप्लेंट को, ऐसे कंप्लेंट्स कितने बार आपने सॉल्व किया होगा, आपका टर्न अराउंड टाइम्स क्या है, रिपीट फेलियर्स कितना है, उस पे आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, लेवल वाइज सर्टिफिकेशन. ये रेगुलेशन नहीं है, ये टेक्नोलॉजी आपको डिसाइड करेगा कि आपका रेगुलेट. यू सी, इट इज ऑलरेडी एप्लीकेबल. मैं ये कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं, ये बाकी सब इंडस्ट्रीज में देखो, आपको पता चलेगा. उबर, there is a car rating which comes, there is a driver rating which comes, that is an intelligence driven rating. लाइसेंस नहीं दिखाता है लेकिन रेटिंग दिखाता है आपको. So technology will take over regulation, and that is where things will change. Online skill level certifications, which I spoke to you about, algorithm driven. Multifold job opportunities, huge job opportunities will get created because now everyone will like to share resources. Technicians will like to work with multiple companies. Companies would like to actually work with different kinds of technicians. It will transform this entire landscape. Component manufacturers, today, majority, 80% of your components or manufacturers is sell to the OEM. That will get disrupted. They will continue to start selling to everybody. So they will play a huge role in the whole business of services. In supplying directly, they will know, the platform will give them information. AI and machine learning for IoT data. So ये जो data जो आएगा, इसमें आपको energy consumption data आएगा, इसमें आपका breakdown data आएगा, machine learning, and AI and machine learning is already available. इसको कोई develop नहीं करना है. The biggest platforms like Amazon, Azure, Google,
I've already available at a small fee. They will give you the AI and ML. It is for you to use what AI means, artificial intelligence, ML is machine learning. This data ko leke, you will start predicting what is going to happen to this machine and will start doing corrective measures to avoid the failures. You will be more preventive in nature. Then you can see how the AMC business, which completely transformed with lesser failures. Easier access to capital. Now, whoever thought that the biggest competitor, every banker thinks that the biggest competitor is going to be another bank. Did anyone realize that the Amazon is a competitor to a bank? We never thought about it, right? Amazon के जितने suppliers है ना उनके platform पे, उनको वो जो सबसे ज़्यादा है ना उनको पैसा देता है, low interest and to scale up their business. And how do they decide who is it is? Based on information that is available on the platform. How good is this technician? How good is this company? कितना calls attend कर पाता है? कितना उसका customers का rating है? इसी में से पता चलेगा कि इस company में इनको invest करना है और वो low rate पे they will end up giving you capital which will help you scale up the business. Imagine component manufacturers जो manufacture कर रहा है and he's increasing his sell and he's getting great ratings. He will start. So that whole capital working itself will dramatically change. Opportunity scale up without having traders and wholesalers. अगर आप एक नया मैन्युफैक्चरर हो और आपको अगर रीच आउट करना है टेक्नीशियंस या फिर सर्विस प्रोवाइडर्स को, यू हैव अ बिगर अपॉर्चुनिटी ना. बीच का जो आदमी है, जो ट्रेडर्स और होलसेलर्स है, दे विल एक्चुअली टेक अ बैक सीट. सो लेट्स डिस्कस हाउ प्लेटफॉर्म विल इंप्रूव एफिशिएंसी. तो ये बहुत से डिसरप्शंस आएंगे. मैं 3 चीज आज उठाऊंगा जिससे जो रेलेवेंट है हमारी सर्विस फील्ड के लिए. सबसे पहला, मैन्युफैक्चरर अपना इंप्रूव कैसा कर सकता है, सर्विस डेटा यूज कर सकता है. हाउ कैन सर्विस प्रोवाइडर्स इंक्रीज देयर एक्सेस टू सर्विस टेक्नीशियंस एंड हाउ कैन टेक्नीशियंस एंश्योर दैट देयर इनकम इंक्रीजेस. एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ कैन कस्टमर्स एंश्योर दे हैव एक्सेस टू रिलायबल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. Plenty of changes, but these are the 3 important problem areas that I'm taking up to explain it a little more better. How can a manufacturer improve the product using service data? IoT-enabled machines will transmit real-time energy consumption and error codes to manufacturers through the platform. Now, people might say, "यार, हमारे life में अभी तक IoT देखा नहीं है." You know, I'll two important data that you have to keep in mind to understand how IoTs will come. First, हमारे देश में 2 बिलियन सिम कार्ड्स है. 2.5 बिलियन सिम कार्ड्स आर ऑलरेडी एक्टिव. हमारा देश का पॉपुलेशन क्या है, 1 बिलियन. तो यानी कि डबल सिम कार्ड्स ऑलरेडी है. रिलायंस जियो ने हमारा वॉइस को तो फ्री कर दिया ऑलरेडी और उनका टारगेट है कि वो अगले 10 साल में 10 बिलियन सिम कार्ड्स बेचेंगे. इसका मतलब क्या है कि हर आदमी 10 फोन उठाएगा, 10 सिम कार्ड रखेगा? नो, दैट्स नॉट द फोकस. दे आर टॉकिंग अबाउट M2M, यानी कि मशीन टू मशीन. Jio is focused on making sure IoT is done. So all these sensors will get activated with easy to use SIM cards and they want to use that data. And that's a real time thing which is happening. IoT enabling. And the second important thing, अच्छा कौन सी कंपनियां इस पे काम कर रहा है कि ये जो प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहा है, IoT डेवलप कर रहा है? There are about 83 startups, which is in my knowledge right now, who are focused on building IoTs and platform for the HVAC industries. And you look over the other engineering colleges and other startups, within the next 2-3 years, this will be all out in the market. And that's where the progress is happening. Data analytics and artificial intelligence will suggest better modeling and better product development for manufacturers. Platform will make the world a small place. Global component manufacturers, global jobs. You will have more micro entrepreneurs. For technicians, you should be, there was an earlier talk about how you should have the vision to be bigger. This is your era. 21st century is the technician's era. You will be a micro entrepreneur. You will be, by default, you will be able to double your income and everyone will want to go after you. That is most important.
Comparative component failures from various manufacturers. Today now, you will get data not only of one product, but you will get it of multiple products. So everyone will use each other's information to improve and give a better product. Predictive maintenance will definitely reduce spares consumption, will reduce AMC value, and will increase profitability. Can you imagine? Value, price कम होगा और आपका profit बढ़ेगा. That's the beauty of a platform model. Price will go down and your profit will go up. Which was never thought that these things would happen. And manufacturers will sell direct to consumers. It's a very harsh reality. In the platform model, they will. You have to figure out what your role is. I'm not saying everything will stop. We will all continue. But at one point, it is already happening, right? Your phones are being sold. Cars are being sold today online. Directly from the manufacturer, you can buy. What is ACs in that, yeah? And I'm not talking any just residential. You will see commercial like it. Manufacturers will sell direct. How do you prepare for that? That is one thing you need to keep in mind. How can service providers increase their access to service technicians? And technicians का अपना income कैसे बढ़ा सकता है? First of all, जो technician certification is a challenge, and almost everyone, हम सब सीख रहे customer के cost. That will stop. The platform will actually start certifying technicians. Learning will be on the job. You will learn on the job. Classroom learning will go out. It will be a video based. Yeah, maybe once in a year you will be called in to do a certification program, not to teach, but to give an exam, take your letter and go. That's it. But you will learn every day, every time. That's a reality, and that's how it is going to be. And it's going to be video based. Working capital requirements for service providers as they would increase their business from being brand specific to equipment installers. So this is most of the service dealers, most of the companies which are exclusive to one company will suddenly find them having the opportunity to deal with many brands. So because they are a service provider, the working capital and stock keeping will all change. But you will become a service provider and a service dealer and wanting to say, hey, my job is to provide maintenance. My job is to provide installation. Why should I install for only one company when I make no money on that? I should be installing and giving great service so my customers pay me. So that will become a USP. Technicians, as I said, will work for multiple companies and will take on a role of a micro entrepreneur and double their income. That is extremely important. This is your age. This is your time. Over the next 10 years, your life will change, and it's great for the industry, it's great for the consumer, and everyone will stand to benefit out of it. The last important thing, how can customers ensure they have access to reliable products and services? IoT-enabled machines will call. आज preventive service कैसे करते हो आप? ठीक है, आप preventive service कैसे करते हो? Scheduling होता है, हर 3 महीने में जाके servicing करना. Everybody. Why is it to be serviced every 3 months? There are some machines जो हर महीने में सर्विस होना चाहिए, जो some machine जो 6 महीने में भी सर्विस करने की जरूरत नहीं. और कौन से भी प्रोडक्ट ले लो, residential, commercial, industrial, it is a common fact. That will change. You will have the machine telling you and giving you ideas on as to what is it that I need right now. IoT sensors will tell you, should I need to change the services or should I need a service or should I not need a service? These are called as bots. Bots come out from a short form of robots. So robots is the hardware. In software, you call those automated systems called as bots. बॉट्स का मतलब क्या होता है? जब आप ट्रेन टिकट बुक करते हो या फिर आप फ्लाइट टिकट बुक करते हो, आपका व्हाट्सएप में नोटिफिकेशन आता है ना ऑटोमेटिकली. वो कैसा होता है? वो नॉट कोई आपको व्हाट्सएप नहीं भेज रहा है, मशीन भेज रहा है आपको. So those are the kind of bots. So those bots will now start talking. It will not only send you a message, it will go to the platform and it will automatically allocate a technician. So it is not only about receiving information, it is also about acting on the information. Energy labeling, green building monitoring, equipment performance, everything will get democratized. And that will empower your customer tremendously. And when that happens, you will see technological improvement, better efficiency, and better services. Customers will insist on certified technicians. They will want to check certified technicians. They want to make sure that people are certified. Large B2B customers will buy parts directly from component manufacturers. This whole pipeline of trying to hold on to my brand,
to my components. Because you have bought my machine, I will milk you through the entire life cycle of the product, will get disrupted. It will go in the customer's benefit. Costs will go down and component standardization will take place. Because anybody, the advantage here is, see, in our country, हमारे देश में ये एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री अगले दो डेकेड में, अगले 20 साल में 8 से 10 गुना बढ़ने वाला है. So any manufacturer will want to stay focused on manufacturing. So if you have to be competitive on your pricing, you will have to do standardization. Services and support will become brand agnostic. It is not going to be brand driven unless the brand really makes a big difference in creating a differentiator. And manufacturers will share service providers and customers will get reliable services. So access to real-time performance, and customer will have more brands to choose from. When I say more brands, is today there are 26 brands. Tomorrow there could be 100 brands. And out of those 100 brands, maybe 30 of them can come in from India. It's possible, and customers will choose from when they don't see much differences. So here's the last thing. How do we prepare? Okay, there are some things which are very interesting and exciting, and some things are scary, to be very honest with you. We don't know how it is going to be. First, get on a learning curve. Understand the depth what digitization is. Digitization is not about getting one software. That's not what digitization is. Understand how it has impacted other industries. दूसरे इंडस्ट्रियों में कैसा फर्क पड़ा हुआ. It doesn't matter कि आप business owner हो. It doesn't matter कि आप technician हो. It doesn't matter आप trainee हो. It doesn't matter you're a big company. It is important to understand what digitization is. Or this process you will understand when you go out of the air conditioning and HVAC&R industry and see कि ये बाकी दूसरे इंडस्ट्रीज में क्या हुआ है यार. वहां पे अगर हो सकता है तो हमारे इंडस्ट्री में भी हो सकता है. हमारे इंडस्ट्री में वो हो सकता है तो मेरा क्या इन्वॉल्वमेंट होगा, मुझ पे कैसा इंपैक्ट होगा. आस्क इफ योर करंट जॉब, बिजनेस और जॉब कैन एग्जिस्ट इन द प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम. यू हैव टू आस्क दैट. अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, क्या ये प्लेटफॉर्म इंडस्ट्री में मेरा बिजनेस रहेगा? क्या आप एक मिडिल मैनेजर और सुपरवाइजर हो? एंड आई वांट टू रेज दिस इशू. यू नो, हमारे सर्विसेज फील्ड में ना मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स, टेक्नीशियन, ट्रेनीज, टेक्नीशियन, सुपरवाइजर्स और मैनेजर्स. अब आप मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स का जॉब प्रोफाइल देखो, वो पाइपलाइन मोड में क्या करते हैं. वो तो फील्ड पे ज्यादा जाता नहीं है. ट्रबल शूटिंग, जब बड़ा प्रॉब्लम होता है तो टेक्नीशियन को हेल्प करने जाता है. And he's managing maybe 10 technicians, 15 technicians. He's managing 70 to 80% is administrative job. आदमी टाइम पे आया कि नहीं, कॉल अटेंड किया कि नहीं, प्रोसेस फॉलो किया कि नहीं, उसको पार्ट्स मिला कि नहीं, कोऑर्डिनेशन. दिस इज एडमिन रिलेटेड. दिस इन अ प्लेटफॉर्म बिजनेस, ऑल दिस एडमिनिस्ट्रेशन टेक्नोलॉजी विल टेक ओवर. डू यू थिंक if you are a manager or a supervisor at the age of 30, 40, 30, 35, you have another 20 years to go or 30 years to go in your career. Yeah, this job will continue to be. मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि मैनेजर सुपरवाइजर सब गायब हो जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स बहुत हद तक कम हो जाएंगे. जो टेक्नीशियन होता है ना, जो ग्राउंड लेवल पे जो खुद जाके काम करता है ना, he will become the most important man. Because that skill that he has, technology cannot replace. Administrative skills will get replaced. Technology will disrupt that. Ask that question कि अगर ये प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम जो अगले 10 साल में जो आने वाला है, यहाँ पे मेरा रोल क्या होगा. आइडेंटिफाई एरियाज. आइडेंटिफाई कि ये अगर प्रॉब्लम होगा तो मुझे रीस्किल कहाँ है, मुझे नया स्किल कौन सा सीखना है, ताकि जब ये प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम बनेगा तो मैं इसमें फिट हो जाऊंगा. एंड आई विल ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम इट. लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज. लाइक द इंडस्ट्रियल एज, digital age, which 21st century is all going to be digital age, there is going to be an opportunity here. See what the industry will offer. Look for ideas. Start preparing for it. Don't get scared. The foolish people are the people who get scared of change. The best people are the people who accept change and look for opportunities. And that's the benefit that you should look for and you should prepare for. Before I conclude, one of my favorite things on digitization or the change in technology is, traditionally हमारा belief ये होता था कि the big is eating the small.
ओके जो बड़ी कंपनी है वो छोटी कंपनी को कहा जाएगा। और हमारी बड़ी कंपनियों में एक एटीट्यूड भी, मैं मार्केट लीडर हूँ, कुछ नहीं हो सकता है मुझे, मैं 25 साल का डीलर हूँ, बहुत बड़ी है, 200 आदमी 100 आदमी को रखा हुआ है, मेरे साथ तो कुछ नहीं होगा, मेरे साथ होगा तो लास्ट में होगा। It is always big beating the small. The big has the first mover advantage and meeting. This is the pipeline approach. This happens only in the pipeline. In the platform, it is not about big beating the small. It is the fast beating the slow. People who think fast, people who adapt fast, whether you are a technician or you're a small service provider, you will win the battle. And that's the reality of the platform business that is coming in, or the platform ecosystem that you will see coming in the next 10 years. Thank you very much. Open to any questions that you would want. Thank you, Ajit bhai. It was a really powerful tool actually, which you have given to the participants, because digitization and IoT and industrial revolution is going to change each and every market in the segment. And this is need of an hour. We really need to upgrade ourselves. We should be handy with this particular tool, because it is going to change the entire world dramatically. So true, all these insights which you have shared, we are really lagging in HVAC, and then people are working like IITians and all other research scholar students are working on all those fronts. And hopefully soon it will change the market of air conditioning also. So if anybody is having any question, they can raise their hand, they can put into the Q&A box. We can have. Yeah, in the meanwhile, I am requesting Vandana. Okay, you have already given. So requesting all of you to put your feedback in the feedback form. The link is already provided in the chat box. You can go into the link and give your feedback. It is really required to improve at our level, and then and the improvement journey towards the excellence. So that is really required. Anybody is having any question, then they can ask. Till the time, Ajit bhai, I am having one question. How it is difficult to move into the service industry with the digitization and IoT tools. So how people will be, because it's an area where this is the backbone of our HVAC&R industry, and how it is difficult to reform or reshape our backbone with the digitization tool. Awesome question, Mukesh. Before I answer that question, Mukesh, just a simple question that I have. Do you use Facebook? Yeah. Do you use WhatsApp? True. Who taught you how to use it? It was the demand. It was the demand. It was. And you took your interest. And you took your interest to figure out what it was. And you realized that, listen, I have to be on WhatsApp. I have to be on Facebook, because everybody else is on that platform. Correct? And the biggest thing is you took that initiative. You took that initiative to learn how to use it, and you took that initiative to figure out how it is done, and you kept at it because your ecosystem was there on it. That's exactly what will happen even with this industry. People who take interest, people who actually go out and figure out what is happening, people who try it out, people who experiment with it, will be the people who will get into it much faster. People who resist it, people who say, ये मेरा काम नहीं है यार, ये हमको सॉफ्टवेयर समझ में नहीं आता, हमको टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आता, they will stand to lose. There is an old saying, smell the coffee. That's what it means. There's a huge change happening. You have to understand what's happening. And like how you adopted these social media platforms, our industry may be, these platforms also you will end up accepting. I mean, it is evolving. So most of us might find it very intimidating right now. But that's how it is, yeah. Even in the industrial age, if you read about it, when mass manufacturing happened, it was intimidating. I mean, when the automobile was invented, everyone was driving a horse cart, and that was the biggest industry of transportation. It was very intimidating, but people who adapted moved ahead. That's how it is going to be. So even in the digital age, people who are having open mind, people who are ready to learn, people who are ready to explore, people who are ready to experiment, वो successful रहे, बाकी वो पीछे रह जाएगी. And that's the only answer that I can give. There is no other set model to it.
Yeah, that's true. Even the things which are happening at the industry level, those who have taken interest, really keen towards the new technology, latest technology, they are taking the benefit, and that will happen. Yeah, that's true. Yeah. And so, Mukesh bhai, also the other thing, the pandemic has taught us all these things, right? In the last 2 years, if you see, some of the companies that have done very well are the people who did not say that कि अभी pandemic है तो business नहीं होएगा, बंद हो जाएगा. बराबर. जिसने आगे निकला और कुछ सीखा और कुछ किया, वो आगे निकल गया. They are way ahead today. So that's a big difference. बराबर. And जिस दिन सोच लिया कि ये करना है, वो दिन half of the work has been done. Absolutely. So it's all up to you to take that interest and to get over that mental block. True. So, Vandana, I'm requesting to share your screen, and there's a token of appreciation from Ishrae Bombay chapter to Ajit bhai. So a small certificate of appreciation for sparing your time, sharing the insights about the digitization, and then a small tool, small word, but it will change the entire industry and not even air conditioning. It will also going to change the other sector of the industry. Absolutely. Thank you so much to Ishrae for putting this and being consistent about Acreserve. I think it's a fabulous program. So thank you, Amod, Mihir, Akash, everyone from the Ishrae team, Sanjay, who's actually put this event together. Thanks a lot.